देखते हैं डाइजेशन ट्यूब क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, अब हम पढ़ेंगे नॉन वॉल्यूमेट्रिक। कैलिब्रेटेड एट 25 to 50 डिग्री ml। ये जो इसमें दो कैलिब्रेशन होता है, एक 25 ml और एक mainly used for the conversion of organic matter into organic matter। mainly इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कोई inorganic matter में कन्वर्ट करना हो, वहाँ पे हम लोग डाइजेशन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और heating it in the presence of digestion mixer। और हम लोग ये कन्वर्शन कैसे करते हैं ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में, ये कैसे होता है, हीट करके by heating in the presence of digestion mixer। किसकी मदद से, डाइजेशन मिक्सर की मदद से। डाइजेशन मिक्सर क्या होता है, इसके अंदर 50% सल्फ्यूरिक एसिड वाइन सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है, जिसके अंदर 50% सल्फ्यूरिक एसिड और 50% सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है। जिसको बीपी की समस्या हो, ठीक है, एक भी मेरे पास नहीं है बीपी की कोई दिक्कत हो, तो मैंने क्या किया, सबको नॉर्मल मैंने चला सिर्फ 140 तक उसको इन्फ्लेट किया। इन्फ्लेट किया आपका पहला साउंड, इसको बोलते हैं कैसे, कैरक ऑफ साउंड, KAROFF, ठीक है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ऐसी होगी KAROFF, कैरक ऑफ साउंड। जो आपको सुनाई देता है ये साउंड कहलाता है कैरक ऑफ साउंड। ऐसे बांधा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसके अंदर क्या किया,